Mhm. Good morning, kids. Today's class, we are going to discuss the 24th January evening shift, JEE Mains 2025. Paper is moderate and lengthy. It's not tough, it's lengthy. So you should be good in formulas, and you should have a good conceptual background. And paper is lengthy. एक एक क्वेश्चन 3 या 4 5 लाइनें, तो द फास्ट रीडिंग एबिलिटी ऑल्सो आपके पास बहुत ज़्यादा चाहिए. लेट मी स्टार्ट द पेपर डिस्कशन. फ्रॉम 24 जनवरी सेकेंड शिफ्ट पेपर डिस्कस कर रहे जे मेन्स 2025. आई एम योर फिजिक्स लेक्चर श्रीधर सर. I will start with the paper. So the first question, Young's double slit experiment. So the question is based on YDS here. Let me write the name of chapter. YDSC. Young's double slit interference apparatus is immersed in liquid of refractoriness 1.44. It has slit separation of 1.5. The slits are illuminated by parallel beam of light whose wavelength in air is, this is a wavelength, this is a refractory index, this is slit separation. The fringe width on a screen at a distance of 0.72 meter. So we are having this is slit. Parallel beam of light is incident. Lambda. The slit separation is D. And this is the यहाँ पे screen है. And a complete setup is immersed in a liquid. This whole setup is immersed in liquid. ये तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा. सो नो आफ्टर दिस यहाँ पे फ्रिंज विड्थ के बारे में पूछ रहे हैं. इसका वेवलेंथ इन एयर इट विल बी लैम्डा. यहाँ पे लिक्विड इट इज इमर्स्ड इन लिक्विड. देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्रिंज विड्थ? फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला तो लैम्डा कैपिटल डी by mu into d. What is the mu? Refractive index of liquid. यहाँ पे लैम्डा कितना दिया है? 690 नैनोमीटर, 10 to power of minus 9, 0.72. द डिस्टेंस d है. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.4. 1.4. सेपरेशन 1.5 into 10 to power of minus 3. So जब हम सॉल्व करेंगे, so this will become 2-3 millimeter. You should be very good in calculations. यहाँ पे so there's a problem based on YDS here. तो आपको YDSC तो पता ही होगा. So the problem is based on the YDSC wave optics. The topic name is wave optics. Chapter name wave optics, and it is based on the YDSC. So there's a formula. A formula आपको याद रहना चाहिए, and there's a basic background diagram. यहाँ पे fringe width. What do you mean by fringe width? यहाँ पे हम like these are the dark fringe. इसको हम fringe width कह सकते हैं, और W or this one, the distance from the center of white fringe to next white fringe, or from the center of dark fringe to next dark fringe. This is called like a fringe width. ये थोड़ा background आपको याद रहना चाहिए. This is very important. And there's a formula to calculate the fringe width. I will take the next question. Okay, the next question is it is based on the electromagnetic waves. Chapter name is EM waves, electromagnetic waves.
Arrange the following. So let me read the question. Arrange the following in the ascending order of wavelength. यहाँ पे microwaves, ultraviolet, infrared and X-rays है. Choose the most appropriate answer from the following given options. इसमें से कौन सा options है? So हम यहाँ पे wavelength spectrum आपको थोड़ा याद रहना चाहिए. So what is the wavelength? अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे स्पेक्ट्रम, जब आप ड्रॉ करेंगे सो मैं जस्ट बेसिक स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर रहा हूँ. रफ डायग्राम. फर्स्ट यहाँ पे आपको गामा 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 रेज स्पेक्ट्रम में, बाद में एक्सरेज, देन उसके बाद में अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और बाद में इसका रेडियो वेव्स. दिस इज द वेवलेंथ. सो अब जब देखेंगे तो लाइक वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव्स, यहाँ पे माइक्रोवेव्स का वेवलेंथ कितना है? लैम्डा 1. अल्ट्रा वायलेट का कितना दिया है? लैम्डा 2. इंफ्रारेड गिवन लैम्डा 3. एक्सरेज गिवन लैम्डा 4. So lambda 4 greater than lambda 2 greater than lambda 4 less than lambda 4 less than lambda 2 less than lambda 3 less than lambda 1. ये तो लाइक दिस इज स्पेक्ट्रम. सो आपको आपको ये स्पेक्ट्रम याद रहना चाहिए. अगर आपको लाइक स्पेक्ट्रम पता है तो द स्पेक्ट्रम विल बी वेरी इजी फॉर यू. EM waves में like they'll ask very simple questions. वेव प्रोपगेशन का, स्पेक्ट्रम के बारे में, देन इंटेंसिटी ऑफ वेव, पावर ऑफ ए वेव, हाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ EM wave, like when EM wave propagating along x-axis, how E bar and B bar will be in phase, how they'll be directed. Yeah? So it takes एक 1 hour. अगर आप 1 hour में EM waves एक बार पढ़ के, और every day 5 minutes if you can remember formulas, revise formulas, definitely एग्जाम में कौन सा भी प्रॉब्लम आने दो, यू कैन मैनेज. तो पहले आपको चैप्टर पढ़ना चाहिए, एक बार पढ़ के समझ लेना चाहिए, देन रिवाइज द रिमेंबर फॉर्मूलास, बाद में PYQ. बिना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आप जितना भी प्रॉब्लम करेंगे वो उतना फायदा नहीं होगा एग्जाम को. ओके फाइन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे. हाँ, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर. ओके, असर्शन रीड करता हूँ. Electron in certain region of uniform manifold is moving with constant velocity in a straight line path. यहाँ पे assertions का हम ये कर लेंगे. Electron and it is moving with a straight line path velocity of electron is moving with a constant velocity. यहाँ पे magnetic field है. So when it will move with a constant velocity, if velocity is parallel to the B bar, no, if then only this is possible. यहाँ पे electron is moving, so then definitely what should happen to the electron should move parallel to the magnetic field, then only it goes in a straight line. There's a basic condition. Electron in certain region in uniform magnetic field is moving with a constant velocity in a straight line path. Then this can happen only when velocity of electron is parallel to B bar. So what is the basic formula? यहाँ पे formula आपको QVB sin theta. Theta 0 degrees and 180 degrees. For these two conditions only a possible होता है. Then next reason. The magnetic field in that region is along the direction of velocity of electron in the light of above statement. I think both सही है ना. Reason assertion भी correct है, reason भी यहाँ पे correct है. So we'll pick up option 2.
So even our assertion is correct, and the reason is also correct. Okay, fine. This is about just motion of charge particle. So कौन सा chapter का है लगे? Moving charges and magnetism, and it is based on this particular formula, F equal to QVB sin theta, charge moving in a uniform magnetic field. Now we'll take the next question. A solid sphere is rolling without slipping on a horizontal plane. The ratio of the linear kinetic energy of the center of mass of sphere and rotational kinetic energy. This is based on the rotational mechanics, rolling motion. यहाँ पे रोलिंग मोशन में पूछ रहा है. So what is the basic concept यहाँ पे like? So this is the solid sphere. इसका center of mass C, velocity V and omega. It is having pure rolling. Pure rolling means V equal to R omega. Velocity of point P will be 0. What is the velocity of point P? V minus R omega is equal to 0. Then only it will become pure rolling. यहाँ पे हमें the ratio of linear kinetic energy of center of mass of sphere to linear kinetic energy. Linear kinetic energy means translational और बाद में इसका rotational. Translational kinetic energy कितना होगा? mv square by 2. Rotational kinetic energy ic omega square. Moment of inertia calculate करेंगे 2 by 5 mr square. बाद में a 2 cancel हो रहा है. Then omega we can write it as v square by r square. इसका तो total 5 by 2. For pure rolling, सर यहाँ पे like what is the basic idea like? यहाँ पे हम omega for pure rolling v equal to r omega. So जहाँ पे omega है then we can write it as v by r. Just rolling, simple सा idea rolling. For pure rolling, velocity of point P will be 0. For forward slipping, Vp greater than 0 for forward slipping. Vp less than 0 for backward slipping. Vp equal to 0 for pure rolling. This is the concept. एंड जब रोलिंग होता है इस दो एनर्जी रहते हैं उसके दो तरह के काइनेटिक एनर्जी रहते हैं. एक ट्रांसलेशनल ड्यू टू मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक रोटेशनल. सर लगे व्हाट इज द बेसिक आइडिया इसके बारे में? लगे जब आप कौन सा तो गाड़ी जा रहा है उसका एक पहिया तुम देख लो, लगे व्हील. व्हील क्या लगे? व्हील अबाउट सेंटर ऑफ मास जो भी पॉइंट से वो घूमते रहता है एंड सेंटर ऑफ मास अलग से जाते रहता है, अलग से. इट विल बी मूविंग अलोंग द रोड स्ट्रेट लाइन. तो यहाँ पे दो तरह के काइनेटिक एनर्जी होता है, एक ट्रांसलेशनल और दूसरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. इसका रेशियो पूछ रहे हैं. टोटल काइनेटिक एनर्जी मीन्स सम ऑफ दिस टू. आई थिंक सिंपल कॉन्सेप्ट है. इसके लेके आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत भी नहीं है. थोड़ा बहुत आपको theory याद रहते यू कैन मैनेज दिस थिंग्स एंड दिस अ बेसिक आइडिया. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. नाउ दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन बायो-सावर्ट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ. Ampere circuit law, and the question is based on Ampere circuit law and moving charges and magnetism. This is a chapter name, this is a subtopic, Ampere circuit law. A long straight wire of a cross sectional, यहाँ पे हमें एक long straight wire है. इसका रेडियस कैपिटल आर होगा. कैरिंग करंट है. What is the question? A long straight wire of cross section with radius A
इसका रेडियस ए बना लेंगे. Then carries a steady current I. The current I is uniformly distributed across this cross section. Plot magnitude of main field with distance up from center. I think बहुत सारे लोग इसको शायद पढ़ चुके होंगे. Directly, if you know the concept, you can manage इस तरह के questions. This is simple, directly theoretical one. इसके लिए like टीचर जब पढ़ा रहे तो द नोट्स लिखते हो ना, दैट नोट्स इज वेरी इनफ फॉर जेई मेंस. जितना बार तुम उस नोट्स को तुम रिवाइज करोगे उतना क्लैरिटी आपको आ जाएगा. उसी क्लैरिटी से आप जब पीवाई क्यू सॉल्व करते हो, हर एक प्रॉब्लम जब सोचते हो ना, दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड इन जेई मेंस. एग्जाम कम लिखो, बट जितना होता है उतना टीचर नोट्स रिवाइज कर लो. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन. जेई मेंस के लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, जो तुम पढ़ चुके हो वो याद रहना चाहिए. देन सॉल्व पीवाई क्यू. पढ़ना ज्यादा है, यू हैव टू रिवाइज मोर. 60% ऑफ टाइम रिवाइज टीचर नोट्स, 40% ऑफ टाइम सॉल्व पीवाई क्यू. लास्ट 5 years हर एक पीवाई क्यू करने का जरूरत नहीं. लास्ट 5 years का. ओके, विल कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड. सो मैं पहले वायर ले लेता हूं. पहले अंदर इसके अंदर में कैलकुलेट करेंगे. इसका रेडियस ए, यहाँ पे विल एज्यूम रेडियस स्मॉल आर. टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है इन रेडियस ऑफ आई, इन रेडियस ऑफ ए टोटल करंट इज आई. ए जो सर्कल हम डाल रहे हैं ना, इसके अंदर में कितना करंट जा रहा है. So we'll call this is I. Then current density we define it. I by pi a square. Then इस क्रॉस सेक्शन में कितना करंट फ्लो हो रहा है इस रीजन में. तो उसके लिए हम I इक्वल टू J इंटू पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे हम करंट इस तरफ like into the plane assume कर लेंगे. Then here B bar and DL. So ampere circuit law. हम जो फील्ड फाइंड आउट करें, दिस इज द इनसाइड, इनसाइड द, इसको B1 यूज कर लेंगे. सो दिस विल बी इंटीग्रल ऑफ B1 बार डॉट dr इक्वल टू म्यू नॉट नेट करंट एनक्लोज्ड इज I. How much of current enclosed by this circular region of radius r, that is what I. Then हर जगह B bar is parallel to DL everywhere. B bar like this DL. So what is the angle between B bar and DL? It is 0 everywhere. Or DR or DL. I'll make it DL. So B1, this will be DL. What is value of I? J pi r square. So what is the integral of ऐसे छोटे छोटे pieces है जिसको आप ऐसे join कर लेते जाओ. So then what do we get? We get circle of radius r, no? So इसको हम B1 2 pi r mu naught J pi r square. B1 equal to mu naught J r by 2. So this field will increase linearly. यहाँ पे आप outside we know, outside it will be decreasing. Outside, what is the formula for outside due to long wire? Mu naught I by 2 pi r. So ये जो दो formulas है, based on this we have to calculate the we have to pick up the suitable option. Inside the wire it is 0 at the axis, and आप जब away from the center जा रहे हो, away from the axis जा रहे हो, इसका magnetic field increase होता है, that too linearly. Then outside the wire, totally somewhere here outside the wire it will be B bar proportional to 1 by r, rectangular hyperbola. So we'll pick up this particular graph. This will be our option.
Okay, fine. So this will be our key. आई थिंक एग्जाम में इतना भी सोचने का जरूरत नहीं है बिकॉज आप पढ़ चुके होंगे मैग्नेटिक इनसाइड द लॉन्ग वायर यूनिफॉर्मली चार्जिंग करंट यूनिफॉर्मली कैरिंग करंट बी प्रोपोर्शनल टू आर आउटसाइड ड्यू टू लॉन्ग वायर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर वो फॉर्मूला आपको याद रहेगा बस देखते ही आप ऑप्शन यहाँ पे पिकअप करना है आई टेक द नेक्स्ट दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द thermodynamics यहाँ पे thermodynamics है assertion in an insulated container a gas is adiabatically shrunk to half of its initial volume the temperature of gas decreases reason free expansion of ideal gas is an irreversible and an adiabatic process so इसके लिए तो आपको just you need the basic in adiabatic process what is adiabatic process TV gamma minus 1 equal to constant or T1 V1 equal to T2 V2 gamma minus 1 half of its initial volume temperature of gas decreases so क्या होता है temperature देख लेंगे इसका तो वॉल्यूम ऑफ हो गया देन T2 इक्वल टू T1 1 by gamma minus 1 to the power of gamma minus 1 gamma is greater than 1 so definitely T2 will become greater than T1 no यहाँ से मैथमेटिक्स चेक कर लो एक बार so but यहाँ पे डेटा क्या दिया the temperature of gas decreases no this is the final temperature it increases so this is the false this is a false बाद में okay we'll take the free expansion of ideal gas free expansion of ideal gas is an irreversible and an adiabatic process what is the free expansion means no work is done by the gas free expansion हम एक पिस्टन ले लेंगे massless piston यहाँ पे गैस है it will expand massless piston then definitely यहाँ पे the gas will push this piston P1 P into A pressure से P1 into A this will become P2 into A अपने आप को रिटर्न नहीं आ सकता है दिस पिस्टन सो यहाँ से दिस फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन यहाँ पे मूव हो रहा है व्हाट इट मेक्स टू मूव द प्रेशर फोर्स देन बाद में अपने आप पिस्टन रिटर्न नहीं आ सकता है देयर इज अ मीनिंग ऑफ इरिवर्सिबल रिवर्सिबल तो अपने आप पिस्टन रिटर्न अगर आ सकता है तो देन इट बिकम रिवर्सिबल इट्स नॉट पॉसिबल so free expansion what happen it can be adiabatic it can be isothermal but is staying adiabatic okay we can expect but it's irreversible free expansion is an irreversible process best example अगर आप perfume bottle the thing is like it contains the perfume or some petrol something it gets evaporated reversible or irreversible it's a irreversible process जो भी पेट्रोल एवापोरेट होता है वो अगेन लिक्विड फॉर्म में नहीं आ सकता है ना देयर इज अ मीनिंग ऑफ इरिवर्सिबल so this is the true statement so we'll pick up that one assertion is false reason is true like a very good question sir can it be isothermal s अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो इट बिकम isothermal also free expansion we can have adiabatic or isothermal but irreversible is a compulsory okay अगला क्वेश्चन this is based on the electrostatics the question is based on electrostatics then
व्हाट इज एक्चुअली इन द कॉन्फ़िगरेशन वन, इसको हम कॉन्फ़िगरेशन वन बोल रहे हैं, शोन इन फिगर। फोर आइडेंटिकल चार्जेस, यहाँ पे एक चार्ज है क्यू नॉट, क्यू नॉट, क्यू नॉट, यहाँ पे कॉर्नर में है, kept at corners ABCD of square of length है। इन द सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन यही चार्जेस को हम मिड पॉइंट पे यहाँ पे रख रहे हैं। द सेम चार्जेस शिफ्टेड टू मिड पॉइंट्स ऑफ GE, मिड पॉइंट्स GEHF। द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टू एंड वन, इसका हम पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं। सो दिस विल बी पोटेंशियल एनर्जी, इसका U2 बोल दीजिए, इसका U1, U2 माइनस U1, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, द डिफरेंस पूछ रहे हैं। तो डेल्टा U इक्वल टू डायरेक्टली यहाँ पे लिख दीजिए, व्हाट इज U2, दिस डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये तो लेंथ, स्क्वायर लेंथ ऑफ साइड ए पूछ A/2, ए वाला तो A/2 है, इसका डिस्टेंस R, यहाँ पे लेंथ कितना है, साइड लेंथ इज A। R इक्वल टू, पहले R कैलकुलेट करेंगे, R इक्वल टू A² by 4 प्लस A²by 4, A²by 2, A/√2। ये हुआ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। डिस्टेंस बिटवीन, इसका भी R है, इसका भी वैल्यू R है, इसका भी वैल्यू R है। सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस 4 टाइम्स K Q0² by R। आपको फॉर्मूला शायद याद रहेगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रैक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे कितना इंट्रैक्शन हो रहा है, लाइक there'll be interaction between the sides. This is also very important. This is not the answer, mine. There's interaction. Okay, एक काम करेंगे, एक चार्ज वन है, इसका एक नाम डाल देंगे, 1 2 3, कितने इंट्रैक्शंस यहाँ पे हमें, ओके, फाइनल इनिशियल, एक I'll change the symbol, it'll be easy for us। फाइनल इंट्रैक्शन में U12, U13, U14, देन उसके बाद में U23, U34, U23, U24 and U34। U12 value will be K Q0² R। U13 का वैल्यू विल बी K Q0² by A। U14 का वैल्यू होगा K Q0² by R। U24 का वैल्यू होगा K Q0² by A। U34 का वैल्यू होगा K Q0² by R। 3K Q0² by R प्लस 2K Q0² by A। R का वैल्यू कितना है, A/√2। सो यहाँ पे हम ओके काम करेंगे, दिस इज द, पहले UF कैलकुलेट करेंगे। सो K Q0² by A, this will become 3√2 प्लस 2। R का वैल्यू कितना है, A/√2, ए हुआ फाइनल। इनिशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। सो वी हैव टू लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ पे भी द सेम मेथड है, इंट्रैक्शन 1 2 3 4, U12 डैश, U13 डैश, U14 डैश, U23 डैश, U24 डैश, U34 डैश, U12 डैश K Q0² A, U13 dash A√2, U14, U23, U24, K Q0² by A√2। Separation between 2 and 4 and 1 and 3 is A√2। वो यहाँ पे हम एज्यूम करें, U34 will be K Q0² by A।
4 plus 2 by root 2. इसका हम कैलकुलेट करेंगे। रूट 2 माइनस 2 रूट 2 डिफरेंस पूछ रहे हैं ना, तो कितना लगे 4, यहाँ पे भी कितना हुआ और एक मिस हुआ ना। ओके 1 2 3 यहाँ पे हाँ, वन मोर इधर है u3 4 विल बी कितना 5 टर्म है ना, यहाँ पे 6 टर्म है, यहाँ पे हमें 5 और एक यहाँ पे होना चाहिए। u12 k q स्क्वायर r u2 u13 k q स्क्वायर u14 u23 यहाँ पे एक टर्म मिस हुआ है। u23 विल बी u24 वैल्यू विल बी k q नॉट स्क्वायर बाय u3 का 4 वैल्यू विल बी यहाँ पे 4 आता है 4 रूट 2। ये इसका डिफरेंस ले लेंगे। सो इज आस्किंग डेल्टा यू uf माइनस यू आई के क्यू नॉट स्क्वायर बाई ए 4 रूट 2 प्लस 2 माइनस इसका टोटल 3 रूट 2 माइनस 2। ऑप्शन 4 दिस विल बी ऑल की। Interaction potential जी, electrostatics interaction potential जी between the charges, what is the formula? K Q1 Q2 by R। अगर आपको ये formula याद रहे तो then you can manage। There's a basic formula। Okay, we'll take the next question। This question is based on the kinematics। Kinematics based on the velocity definition, like v equal to dr by dt। यहाँ पे हमें position vector, what is the position vector? Position vector r bar equal to phi t square I cap माइनस पाई टी जे कैप। वेलोसिटी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। वी बार इक्वल टू डी आर बार बाई डी टी। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका 10t आई कैप माइनस 5 जे कैप एट टी को 2 सेकेंड्स वेलोसिटी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पूछ रहे 2 सेकेंड्स। सो एट टी को 2 सेकेंड्स 10 इंटू 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप 20 आई कैप माइनस 5 जे कैप। मैग्नीट्यूड, सो मैग्नीट्यूड होगा 20 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर। 400 प्लस 25 विल बी 425। ये हुआ इसका मैग्नीट्यूड। आई थिंक 25 इंटू 5 रूट 7, 25 इंटू सो 5 रूट 7 इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। डायरेक्शन पूछ रहे विथ नेगेटिव वाई एक्सिस। velocity, the velocity vector is 20 I cap minus 5 j cap. This is a velocity vector। Angle
theta. So this will A over 20 and this will be 5. So tan theta equal to 20 by 5 will be 4. Tan inverse of 4 it will make with negative y-axis. Or 1 by 4 will be tan inverse of 1 by 4 अल्फा ले लो. tan अल्फा ले लो मीन्स अगर tan अल्फा लेंगे तो इसमें आ जाएगा. सो यहाँ पे तो tan इनवर्स 4 लिख चुके हैं, लिखा है. सो therefore theta is what he is asking with negative y-axis. Option 3 will take it. There's a concept. So आपको a basic definition. Rate of change of displacement is velocity. ये थोड़ा अगर आपको याद रहे तो then by differentiating the position vector we get the velocity. Then what do you mean by magnitude? The like a 5 root 7. आपको पता है vectors, velocity is a vector, so how to calculate the magnitude? We'll take the next. Okay, बच्चों, like this question is based on the kids. This question is based on the rotation mechanics, rolling motion. Rolling on inclined plane. Like these are the basic formulas. यहाँ पे मैं एक solid sphere ले रहा हूँ. Both are having same mass. दोनों का radius same है. एक 1 1 एक ले रहा हूँ मैं. दोनों का inclination भी same है. और rolled on inclined plane. Okay, दोनों का inclination same है. A was solid sphere. This is hollow sphere. What is the time taken by them when they reach bottom of incline? इसका अलग सा लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी होगा. दोनों सेम डिस्टेंस कवर करते हैं. इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे. इसका a1, इसका a2. सो हाउ टू गेट दिस एक्सेलरेशन? यहाँ पे mg sin थीटा, रोलिंग फ्रिक्शन f1. यहाँ पे mg sin थीटा, रोलिंग फ्रिक्शन f2. अल्फा 2, दिस अल्फा 1. अगर हमें एक्सेलरेशन पता है तो देन वी कैन मैनेज फर्दर. So पहले इक्वेशन mg sin theta minus f1 equal to ma1. We are discussing for solid sphere. Solid sphere मैं ब्लू कलर कर रहा हूँ और hollow sphere some ब्राउन कलर दे रहा हूँ मैं. So दोनों का एक्सेलरेशन अलग होगा और रोलिंग फ्रिक्शन भी अलग होगा. Then f1 into r is equal to moment of inertia I1 into alpha 1. For pure rolling A1 equal to R alpha 1. यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे mg sin theta. जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे this will become I1 alpha 1 will be A1 by R. So f1 equal to I1 A1 by R square. So moment of inertia, जिसका moment of inertia. So now what is the acceleration? A2. डायरेक्टली यहीं पे एडजस्ट कर लेंगे. I2 plus mg sin theta r square. मास सेम, रेडियस सेम. तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग रहता है. सो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया नो? A1 का कैलकुलेट करेंगे. A1 का mg sin theta r square मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड स्पीयर. सॉलिड स्पीयर का तो 2/5 mr square प्लस mg sin theta r square. सो यहाँ पे g sin theta r square m r square 5g sin theta by 7. एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्पीयर का.
कैलकुलेशन। ओह, यहाँ पे थोड़ा लाइक A1 इक्वल टू mgr1 I1 प्लस mr² ओनली mr² यहाँ पे। देन ओके फाइन, इसका ओनली mr² यहाँ पे रहता है, सो mr² विल गेट कैंसल, सो 5g sin theta by 7। सिमिलरली A2 का एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर का कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2/3 mr², सो 3g sin theta by 2। देन सी लाइक आपको, यू शुड, व्हाट इज दिस क्वेश्चन, आपको एग्जाम में लाइक यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। मैं टीचर हूँ, लाइक आई हैव टू इम्प्रेस, आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए मैं ये सब डिराइव कर रहा हूँ, बट इन एग्जाम आप इतना नहीं सोच सकते। डायरेक्टली आपको रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, एक्सेलरेशन पता होगा, लाइक व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, दिस फॉर्मूला, ये यहाँ से शुरू करना है आपको। फाइन, अगर डायरेक्टली आपको पता है एक्सेलरेशन ऑफ हॉलो स्फीयर, कितना रोलिंग ऑब्जेक्ट कौन सा है, हॉलो स्फीयर, लाइक हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, रिंग, सॉलिड सिलेंडर एंड डिस्क, 4 रोलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। 4 रोलिंग ऑब्जेक्ट्स को जो भी फॉर्मूला से आप याद करें तो डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट फ्रॉम ईयर, ये भी जरूरत नहीं आपको, ये यहाँ से शुरू करते हैं, so आप बहुत सारा टाइम यू कैन सेव इट, दिस वाज द रिक्वायर्ड फॉर मीन्स। ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको याद रहना चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ हॉलो स्फीयर, एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर, व्हाट इज द फॉर्मूला, दोनों सेम डिस्टेंस कवर करते, so what is the displacement of both the spheres, it will be same, so then we'll take help of the kinematics में what is the formula, L equal to A1 T1 square by 2, L equal to A2 T2 square by 2, T1 by T2, T1 T2 कंपेरिजन यहाँ पे हम इस तरह कर लेंगे, 2L by A1 2L by A2 और A2 by A1, so A2 का वैल्यू विल बी 3/2, 5/7, 21/10, so T1 सॉलिड स्फीयर ले चुके हैं ना, 21/10, so T1 will be greater than T2. Time taken to reach bottom of frame by the solid sphere and also like T1 T2 respectively. A1 mg sin theta 2/5 mr square 5/7, will become A2 by A1, यहाँ पे like 5/7 है ना, 5/7, A2 will be 3/2, 7 3 are 21, yeah, T1 will be greater than T2, this will be our key, so I want you to remember, so this is very important, अगर आपको डायरेक्टली याद रहे तो देन यू कैन मैनेज लाइक दिस, और वरना आपको इतना सारा कैलकुलेशन डिराइवेशन करना पड़ता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देन फॉर्मूलास, दोनों आपको पक्का रहना चाहिए, देन सॉल्विंग PYQ। Okay kids, बच्चों, like this is the next question, which of the following figures represent the relation between Celsius and Fahrenheit scale, so this based on the thermometry, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थर्मोमेट्री, यहाँ पे ग्राफ पूछ रहे हैं, सो देन आपको तो पता होगा सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द फॉर्मूला, C/5 F minus 32/9, सेल्सियस वर्सेस फ़ारेनहाइट, सो ये होगा 5F/9 माइनस 5 into 32 will be 160/9,
इसका ग्राफ पूछ रहे हैं, लाइक पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव इंटरसेप्ट. Look at the graph. Y equal to mx minus c. ये तो स्लोप हुआ पॉजिटिव एंड इंटरसेप्ट हुआ नेगेटिव. दिस इंटरसेप्ट विल बी -160/9. इसका स्लोप हुआ 5/9 बेस्ड ऑन थर्मोमेट्री हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स. वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगर आपको ये इक्वेशन याद रहे तो कन्वर्टिंग सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट देन ओनली पॉसिबल, अदरवाइज यू कांट डू एनीथिंग. दिस बेस्ड ऑन द बेसिक थ्योरी. इसके लिए आपको ब्रेन की आवश्यकता नहीं है. जस्ट गो टू द कॉलेज, लिसन केयरफुली, जो भी टीचर पढ़ाए जितना होता है उतना ट्राई करो समझ पाने के लिए. बाद में जो भी नोट्स लिखते हो वो नोट्स 2-3 बार अगर रिवाइज करे तो देन इट बिकम इजी. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे. किड्स, दिस क्वेश्चन इज, लेट मी रीड द क्वेश्चन. N equal space charges each of value q are placed on circle of radius. सर यहाँ पे charges है. These are the charges. Sir. The circle rotates about its axis. About this axis it is rotating with an angle of omega shown. A bigger Amperean loop B encloses. यहाँ पे हमारा एक Amperean loop है. This is enclosing and a small Amperean loop. यहाँ पे एक छोटा सा Amperean loop भी है. This is the A. यहाँ पे 2 Amperean loop इंडिकेट कर चुके. एक बड़ा वाला B, छोटा वाला A. ओके फाइन. एंक्लोज स्मॉल सेगमेंट. द डिफरेंस बिटवीन एंक्लोज करंट्स, यहाँ पे मैग्नीफिल्ड नहीं पूछ रहा है, ओनली एंक्लोज करंट्स. सो दिस बेस्ड ऑन द एम्पियर सर्क्यूट लॉ. The question is based on Ampere's circuit law. Now, what is the idea? Current enclosed. यहाँ पे there's a one ring. यहाँ पे charges है. It is rotating. And it is rotating about this axis. इसका साइज इंक्रीज करेंगे. ओके देन ये तो ओमेगा हुआ. इसका रेडियस r विल इंडिकेट. यहाँ पे मैं दूसरा एक एम्पियरन लूप ड्रॉ करता हूँ. एंड इट इज अ बिगर वन. फॉर दिस यहाँ पे ये चार्ज एंटर हो रहा है, ये चार्ज एग्जिट हो रहा है. तो व्हाट इज द नेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू दिस लूप विल बी 0. सो यहाँ के आई बी विल बी 0. बाद में वी आर हैविंग वन मोर लूप, छोटा वाला यहाँ से. सो ये एम्पियरन लूप ये. इसमें आप अगर देखेंगे तो दिस चार्ज इज लिविंग. So there's a net flow of current to this loop. यहाँ पे एक चार्ज एंटर हो रहा है और यहाँ पे बाहर एग्जिट हो रहा है. तो व्हाट इज द नेट फ्लो ऑफ चार्ज फॉर द लूप बी विल बी 0. फाइन. सो यहाँ पे लाइक ए चार्ज और वी डिफाइन चार्ज डी क्यूब बाई डी टी. डी क्यूब बोलो तो एन क्यू. डी टी विल बी 2 pi by omega. So n q omega by 2 pi. इसका डिफरेंस पूछ रहा है. आई ए माइनस आई बी. आई ए तो वैल्यू एन क्यू ओमेगा बाई 2 पाई है. सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई बी? आई बी का वैल्यू तो 0 है ना, बिकॉज जितना जो चार्ज यहाँ पे एंटर हो रहा है उतना ही चार्ज यहाँ पे एग्जिट हो रहा है. सो नेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द लूप बी इज 0. सो व्हाई इट इज नेट flow of charge
through loop B is 0. That's why, therefore, high B is 0. Net flow of charge to the loop is non-zero. That's why the current is non-zero. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं पूछ रहा है, ओनली अबाउट द नेट करंट एनक्लोज्ड. दिस आर वन बेसिक थिंग्स. अगर आप एम्पियर सर्किट लॉ फॉर्मूला याद कर लेंगे तो दिस अ थिंग इसके बारे में पूछ रहे हैं. आई नेट जस्ट बेस्ड ऑन बेसिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. The chapter name itself यहीं पे है. It's based on the photoelectric effect, matter waves. Radiation matter, photoelectric effect. I'll write down the name of chapter. Photoelectric effect. In a photoelectric, the stopping potential V0 versus frequency curve is plotted. H is Planck's constant. V0 versus V. V means here यहाँ पे frequency. V0 means stopping potential. So some basic information पूछ रहे हैं. So what is a photoelectric effect? What is the formulas like a energy of the K max? K max should be equal to Hc by lambda or H nu minus work function. K max means charge E into stopping potential. This is the frequency. V naught equal to H nu E minus work function by L. Slope of V naught versus V. करेक्ट ऑप्शंस के बारे में पूछ रहे हैं. V naught versus V is a linear graph. V naught versus V is a linear graph. So can we pick up the option A? Yes, correct. It's a linear graph. The slope of V naught versus curve is pi naught h. Wrong statement, no? ये तो ग्राफ तो इस तरह होगा, पता आपको शायद याद होगा. The graph will be okay. Agreed. There's a ruled out. H constant related to slope of V naught versus V. Yeah, इसका slope. So what is tan theta? H by E. Yes, this is a correct statement. Then the value of L is not required to determine H using V naught versus V. Wrong step. The work function can be estimated without knowing the value of H. Okay, यहाँ पे intercept अगर आपको हमें ये पता है, then without value of H we can calculate this work function. This is also correct statement. So ACE. This is a pure theory. ये तो photoelectric effect. Directly जो भी आप theory पढ़ चुके, अगर वो याद रहे तो then you can manage this very easily. Revising, reading teacher notes is something very, very, very important. Okay, next question. Now this question is based on thermodynamics. And then what is is asking about the heat exchange in cyclic process. यहाँ पे आप देख रहे हो the magnitude of heat exchange by system for given cyclic process ABCA. Process यहाँ से pressure versus volume graph में. So the process will start from here A B C A. यहाँ पे आप semi circle देख रहे हो. This is the process. Area under this curve will give the work done. So हमें यहाँ पे we have to calculate this area. कितना एरिया हमें ये जो सर्कल है इसका एरिया चाहिए हमें. What is the area of circle? Half work done equal to
pi r square by 2. Pi 1 r will be 400 minus 200 by 2. इसका वैल्यू r एंड r. डायमीटर कितना है 400 माइनस 200. इसका रेडियस कितना होगा हाफ ऑफ इट. दैट्स व्हाई यहाँ पे 2 हम लगा रहे हैं. देन इसका डायमीटर कितना है 400 माइनस 200. So one radius will become half of that one. By 2. यहाँ पे यूनिट्स एक बार चेक कर लेंगे. इसका है किलो पैस्कल. सो इसका प्रॉब्लम नहीं है. किलो मीन्स इंटू 10 टू पावर ऑफ 3. यहाँ पे हम बाद में वर्क डन इक्वल टू एरिया अंडर पीवी ग्राफ. एरिया एंड पीवी ग्राफ. इसका वॉल्यूम देखो. इट्स इन क्यूबिक सेंटीमीटर. इसको हम मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है लाइक एंड ऑल. सो व्हाट इज द कन्वर्शन वी नो लाइक ए 1 cubic centimeter. So 10 to the power of minus 6. Okay, we'll calculate this. This will be pi. यहाँ पे हमें 200 by 2. यहाँ पे 100 मिलेगा. यहाँ पे 10 3. यहाँ पे 100 into 10 to the power of minus 6 or divided by 2. 5 pi. This will be in joules. SI unit. So it will be in joules. Now what is the concept यहाँ पे? Area under PV graph equal to area and PV graph will become equal to work done. सभी को पता होगा ये डेफिनेशन. बस अप्लाई करो. इससे ज़्यादा क्या पूछा यहाँ पे. We'll take the next question. बच्चों, this question is based on the ray optics. Based on the convex lens concept. The photograph of a landscape is captured by a drone camera at a height of 18 kilometers. The size of camera film is means where the image is from. This will be like a screen, and the area of landscape photograph. This is the object, the focal length of the lens. यहाँ पे हमें like a will go for small basics. ये वाला लेंस है ना. दिस द लेंस. रफ डायग्राम. यहाँ पे हमारा फिल्म है. And this is the area which is photographed. यहाँ पे लेंस आई ड्रॉ हियर. इसका 2 सेंटीमीटर. 400 किलोमीटर स्क्वायर. 400 kilometer. So this is the object distance. 18 kilometer. This is the image distance. पता नहीं. 14. We have to calculate. यहाँ पे जो एंगल हमें मिलेगा this will be theta. Height of the object. इसको हम एक काम करेंगे. This is the height of the object. This is the height of the image. Directly you go to the ray optics.
हमें रे ऑप्टिक में वी हैव द फॉर्मूला magnification equal to V by U, which is equal to height of the object by height of the image by height of the object. यहाँ पे height of the object कितना है 400 किलोमीटर, 200 हो जाएगा वो, half of it, no? Okay, fine. Height of the object कितना है 1 सेंटीमीटर. सर यहाँ पे 400 आप 200 क्यों लिख रहे हो? सो दिस इज द लाइक ए 2 डायमेंशनल, लाइक अगर 3 डायमेंशनल में इट विल बी लाइक दिस. यहाँ पे लेंथ है एंड दिस इज द फिल्म. Okay, this is the land and this is a film. Okay, ये जो लेंथ है, दिस लेंथ विल बी 400 किलोमीटर. सो इसका हाफ लेंथ कितना होगा 200 किलोमीटर. साइज ऑफ द फिल्म कितना है डायमेंशन स्क्वायर का 2 सेंटीमीटर है. सो इसका हाफ ऑफ इट 1 सेंटीमीटर. So 200 into 10 to power of 3 by 1 into 10 to power of minus 2. So 200 into 10 to power of 5 or 2 into 10 to power of 7. ये वो हमारा मैग्निफिकेशन. देन यहाँ पे हम थीटा डिफाइन करेंगे, tan थीटा h0 by 18 किलोमीटर. This should be equal to hi by v. Height of the this will be 200 kilometer. यहाँ पे 18 kilometer. hi will be 1 centimeter. So v is equal to 18 by 200 centimeter. Nine by 100 centimeter or 0.9 सेंटीमीटर. दिस इज द वैल्यू ऑफ v. u का वैल्यू कितना है 18 किलोमीटर. तो नाउ वी कैन फाइंड आउट द फोकल लेंथ. 1 by v minus 1 by u equal to 1 by l. तो टोटल v का वैल्यू तो 0.09, u का वैल्यू minus 18 किलोमीटर. किलोमीटर मीन्स this will convert into meter. So this will become 9 into 10 to power of minus 4. Now we'll calculate the focal length. इसका फोकल लेंथ वैल्यू कितना होगा f equal to करीब करीब 1.8 सेंटीमीटर. It'll come nearest. Just check the calculations. Okay, fine. So this is some sir like ये थोड़ा समझ में. This is the length. ये वाला लेंथ है, ये वाला फिल्म है. This is the land area. अगर हम रे डायग्राम यहाँ से रेस इस तरह जाएंगे, लैंड यहाँ पे पास होके देन दिल फॉर्म द इमेज हियर. दिस इज सम रफ डायग्राम. यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ. दिस इज बेसिक फॉर्मूला. मैग्निफिकेशन विल बी v by u. एरिया मैग्निफिकेशन वो भी यूज कर सकते और डायरेक्टली वी कैन टेक हेल्प ऑफ दिस वन. Okay, next question I'll take it. And this question is based on the logic gates. यहाँ पे like is asking about the output of circuit is low for. यहाँ पे हम एक काम करेंगे 0.
this is xy, this is a or gate, बाद में this one was like a नॉर गेट है, ये तो और है, ये तो नॉर गेट है, then x plus y. So what is output? Output will be z equal to, कौन सा वैल्यूज के लिए ये जीरो होगा, x0 y0 will be 0 will be 1 possible. The output of circuit is low, then बाद में x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 1, this will be 1 comma this will be 0, 1 plus 0 will be 1, 1 complement will be 0, 1 plus 1 whole complement will be 1 complement, 1 complement will be 0. I think it will be 0 for x equals 0, y equals 0, it will be 1 ना? ए छोड़ के बाकी हर एक इनपुट के लिए आउटपुट y will be 0 only. बी सी डी कहाँ पे है, बी सी डी दिस वन. Like a NOR gate, the concept of like a NOR gate, अगर तो याद रहे तो then you can manage this very easily. This question is based on this one Newton's laws of cooling, and this is out of syllabus, will be deleted. No need to discuss this one. It's there for JEE Advanced, not there for JEE Mains. Okay, why to waste time? Let's take the next one. The energy and momentum P of a moving body of mass related, given that E represents the speed of light directly, the correct equation यहाँ पे पूछ रहा है. like I think आप एक बार एनर्जी इक्वेशन ले लो, E equal to hf sc by lambda. Momentum will define m into v, mass into velocity. So यहाँ पे okay, this E equal to mc square हो गया, but this one is how to justify that one. Mass का like a, what is the momentum kinetic energy, what we can write, mv square by 2 or mv whole square by 2m. K kinetic energy. So where all mass is there, if you want you can replace with energy. No, this K is nothing but energy. यहाँ पे हम एक काम करेंगे, momentum in terms of energy, how we can like energy we have to replace this one. So E equal to mc square, E equal to h by lambda. यहाँ पे like a momentum equation we have to bring it. So what we do is then यहाँ पे like E equal to mc square. So यहाँ पे हम m को रिप्लेस करेंगे p by c. So this will come pc, and what is E? sc by lambda. So what is the momentum? h by lambda. Okay, this is the one basic formula for momentum in terms of wavelength. We can use this particular formula. So E, can we write it as P into C? ये तो already यहाँ पे देख चुके हैं ना? So I think which is option E equal to mc square. So if you square energy, then if you square energy, P square C square. This idea is very important. Momentum in terms of wavelength also you can express. This next question we have, a small uncharged conducting sphere is placed in contact with identical but having 4 into 10 to the power of minus 8 coulomb charge and then removed to a distance such that
The force of repulsion between them is the distance between them is. So this question is based on the electrostatics. This question is based on electrostatics. So here we'll assume like this. They're in contact. The two spheres, they are in contact. इसका रेडियस ए रख देंगे. इसका चार्ज क्यू था पहले, ए न्यूट्रल. बाद में, like when they come in contact, so actually it is like this. When they come in contact, then there'll be charge, conduction will take place. So the charge will become equal as the radius are equal. Now they are separated. They are separated to some distance. यहाँ पे थोड़ा distance का एक कर लेंगे. They are separated to some distance x. What is that separation? यहाँ पे force of repulsion कितना between the spheres? F. So first conduction occurs when this first sphere comes in contact with the neutral sphere. Charge sphere comes in contact. Conduction occurs. The charge will get distributed equally because यहाँ पे charge q by 2 है. So to become potentials equal, the charge will become q by 2 and q by 2. Okay, fine. Then the separation कितना now? Like some distance. This distance x we have to calculate. What is the formula? F equal to k q by 2 q by 2 x square. K का value 9 into 10 to power of 10 दे चुके हैं. Q by 2. So Q value is Q square by 4 होगा total. Q square का value 4 into 10 to power of -8. यहाँ पे लगे distance कितना है separation, the distance between them, that we have to calculate. This x is unknown. Then force कितना है 9 into 10 to power of -3. Okay, when you substitute solve all this, we'll end up this equal to 2 centimeter. Okay, fine. तो अगला क्वेश्चन ले लेंगे. A particle oscillates along the x-axis according to the law x of t equal to x naught sine square t by 2, where x naught 1 meter. The kinetic energy of particle as a function of x is correctly represented by the graph. So this question is based on the SHM, simple harmonic motion. SHM, or what you can call this as oscillations. So what is the equation? X equal to x naught sine square t by 2. Kinetic energy पूछ रहे हैं, so we'll differentiate, we'll get velocity. X naught 2 sine t by 2. Derivative of sine t by 2 will be 1 by 2 cos t by 2. So this will become x naught sine t by 2 cos t by 2. यहाँ पे हम x2 adjust कर लेंगे, so this will become x naught by 2 with the velocity. Kinetic energy बारे में पूछ रहे हैं. So kinetic energy is given by half mv square. Kinetic energy. So इसका m by 2 x naught by 2 sine square sine 2 theta, इसका स्क्वायर कर लेंगे.
then this will become m x naught square by 8 sin square 2 theta. Sin square तो इसका तो नेगेटिव वैल्यू, सो पुट t equal to 0 will be 0, put t equal to 1 by 2, t equal to 1 by 2 will be maximum, put t equal to 1 sin 2, put t equal to 1 by 2 as a function of x पूछ रहे हैं ना, not time. As a function of x it is x not equal to 1 x of t. इसका like as a function of x पूछ रहे हैं. Then sin square t by 2 is come in terms of this, we'll replace it. Like this, some correction is there. This is sin will become 2 will not be there here. Sin 2 theta formula. So this will become sin square theta. इसको हम x में कन्वर्ट कर लेंगे. Okay, fine. Okay, बच्चों, like this will become x not equal to 1 ab, so this will become m by 8 sin square theta. Kind of is a function of time, but kind of is a function of position चाहिए. Okay, what we do is like this x equal to x naught sin square theta. This will become 1 minus cos t whole divided by 2 x naught by 2 so इसका displacement will be, the maximum displacement will be at t equal to 1 ना. इसका यहाँ पे हम substitute कर लेंगे. This will become cos theta का वैल्यू चाहिए हमें, so this will become x minus x naught by 2 equal to x naught by 2 cos theta. Kind will be m by 8, this will become 1 minus cos square theta m by 8 root of 1 minus cos square theta वैल्यू, इसका वैल्यू होगा 1 minus 2x minus x naught by x naught whole square. इसका next step will be m by 8 x naught will be x naught square 4x square minus x naught square plus 4x x naught. Total simplification, this will become k equal to m by 8x naught यहाँ से हम 4 भी निकाल देंगे, m 4x naught, इसका वैल्यू होगा x naught माइनस 4x स्क्वायर. ये तो इसका ग्राफ ए वाला होगा. Little bit mathematically, and this is a concept. यहाँ से हम kind as a function of position चाहिए हमें. This is based on, let me read the, this is based on YDSC and polarization. यहाँ पे in Young's double slit experiment, 3 polarities are kept as shown in figure. The transmission axis of P1, P2 are orthogonal, P1, P2.
द पोलराइजर P3 covers both the slits. यहाँ पे स्लिट है. There's a polarizer P3. Transmission axis of P3 is 45 degree to those of P1, P2. The intensity at a point after P3 where the path difference between light waves from S1, S2 is lambda by 3. This is based on the basic YDAC. एक हम पहले एक काम करेंगे, पहले YDAC का बेसिक डायग्राम विल ड्रॉ इट. यहाँ पे स्लिट 1 है, यहाँ पे स्लिट 2 है एंड पोलराइजर. यहाँ पे एक पोलराइजर P1, यहाँ पे एक पोलराइजर P2. बाद में पोलराइजर P3 यहाँ पे, then light will be incident. यहाँ पे भी लाइट इंसिडेंट है. It will pass through the slit. Somewhere at this point P, we have to calculate the intensity. जब पोलराइजर P1, P2 इसका इंटेंसिटी कितना होगा I नॉट. जब ये पास हो जाता है स्लिट से, इसका इंटेंसिटी कितना होगा I नॉट बाई 2. I नॉट इसका इंटेंसिटी जब स्लिट से पास हो जाएगा ना, पोलराइजर से जब वो पास हो जाता है, देन इंटेंसिटी विल बिकम हाफ. देन ए पोलराइजर P3 है, इसका पास एक्सिस कितना है 45 डिग्रीज. तो इसका इंटेंसिटी कितना होगा नाउ I नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री. इसका इस रे का इंटेंसिटी कितना होगा I नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री. कॉस स्क्वायर 45 डिग्री 1 बाई रूट 2 होल स्क्वायर. इसका इंटेंसिटी विल बिकम ए होगा I नॉट बाई 4. इसका इंटेंसिटी कितना होगा I नॉट बाई 4. यहाँ पे मैं एरोस डाल रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब एरे इस पोलराइजर से पास हो जाता है ना, तो देन इसका इंटेंसिटी हाफ, इट विल बिकम हाफ I नॉट बाई 2. दिस लाइट, इसका इंटेंसिटी कितना है I नॉट बाई 2 एंड इसका पास एक्सिस विल मेक 45 डिग्री. अकॉर्डिंग टू मैलस लॉ, intensity of incident light into cos square of the angle between the pass axis. So 45 degree, cos square 45 degrees. Cos square 45 degree I naught by 2. Cos square 41 by root 2 whole square will become I naught by 4. Okay, agree this. So now we'll work out the problem. Intensity at point P is equal to I naught by 4, I naught by 4 plus 2 root I naught by 4, I naught by 4 cos phi. I naught by 4, this will become I naught by 2. 2 I naught by 4, it will become cos phi. What is the phase angle? But path difference कितना है? इसका path difference 2 pi by lambda. Lambda by 3, they are given delta x. So 2 pi by 3 cos of 2 pi by 3 यहाँ पे लगा दो. So this will become I naught by 2, I naught by 2 cos 2 pi by 3 cos 120 will become minus 1 by 2. इसका वैल्यू यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे. दिस विल बी I naught by 2 माइनस I naught by 4. इसका वैल्यू होगा I naught by 4. दिस इज योर आंसर. की थोड़ा इन मिस्टेक, इट विल बी 2. हाँ, वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम. लाइक यू हैव ब्रॉट यहाँ पे YDAC एंड पोलराइजेशन दोनों को मिक्स करके यहाँ पे पूछ रहे हैं. दिस वेरी गुड प्रॉब्लम.
the resultant intensity at point P where path difference is 2 pi by 3 between the waves. I'll take the next question. This question is based on the solenoid, moving charges and magnetism. सोलोनॉइड कॉन्सेप्ट. सो यहाँ पे हमें एक चार्ज है जो यहाँ पे मूव हो रहा है. फाइन. इसका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, इसका वेलोसिटी v लेंगे. मैग्नेटिक फील्ड b बार, इसका वेलोसिटी b बार आउट ऑफ द प्लेन ले लेंगे. देन फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय दिस वन. इसका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कितना होगा? m omega square r equal to f. Will provide the centripetal force. The centripetal force is provided by the magnetic force. And what is the magnetic force? यहाँ पे magnetic force हम कितना q v b. v what will write? Omega. So omega equal to कितना b cube by m. ये तो आपको शायद याद रहेगा. Then omega we can write it as 2 pi by t. अगर फॉर्मूलाज याद रहे तो डायरेक्टली यू कैन मैनेज लाइक दिस. इसका वो टाइम पीरियड. देन इट्स कहाँ पे रोटेट हो रहा है? सो दिस इज रिवॉल्विंग इन ए सोलोनाइड. यहाँ पे विल एज्यूम ए सोलोनाइड. एंड सोलोनाइड में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा सोलोनाइड का. यहाँ पे वो चार्ज रोटेट हो रहा है and it will produce a magnetic field. So this magnetic field is mu naught Ni. A B वैल्यू यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे 2 pi by QT mu naught. N के बारे में पूछ रहा है. So what is N is equal to 2 pi m QT mu naught I. जो भी वैल्यू है सभी यहाँ पे डाल दो. Then we'll get number of turns per unit length. Number of turns per unit meter. This is what he is asking. Mass of the electron. He has given mass of electron, charge of electron. Oh, यहाँ पे substitute करो. Mu naught value भी आपको पता है. That also they given. And time period also they given. Substituting all here. A very good question. Huh? Okay, fine. Huh? Something is, this charge is revolving inside the solenoid, and because of this magnetic field is moving in a uniform circular path where this r is a radius. ये जो formulas तुमको याद रहना चाहिए. I will take the next question. This is based on the dynamics of circular motion. यहाँ पे pendulum है. It is revolving in circular path. The mass makes 3 pi by rotations per second. So हमें यहाँ पे omega b. Then will provide required centripetal force. Rough diagram. This is a tension mg and a wala theta. So this will be like this: t sin theta, vertical component t cos theta. So t sin theta, horizontal component will provide required centripetal force. ये टेंशन के बारे में पूछ रहे हैं. रेडियस इज कैपिटल आर. इसका लेंथ भी दे चुके हैं. ओके, टी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर बाय साइन थीटा. द टेंशन द स्ट्रिंग इज इन टर्म्स ऑफ एम एंड एल. सो यहाँ पे साइन थीटा विल डिफाइन इट.
Sin theta will be R by L. Omega square ml. Omega, the mass makes 3 pi by rotations per second. 3 pi by rotations per second. तो इसका मीनिंग क्या है, लगे 3 पाई बाई रोटेशन, वन रोटेशन में कितना है, लगे 2 पाई रेडियन। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड। थ्री बाई पाई रोटेशन पर सेकेंड। डायरेक्टली ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे है 3 पाई, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ट्वेंटी 22/7 होल स्क्वायर ml। हाँ, रोटेशंस वी हैव टू, यहाँ पे 2 पाई एडजस्ट करना पड़ता है। The mass makes 3 pi rotation. One rotation कितना है, 2 pi है. So this will become 3 whole square. 3 2 just 6, 36. And simple. यहाँ पे rotations में like I didn't make observation. 2 pi यहाँ पे adjust करना. 3 pi rotation. One rotation is 2 pi radian. This question, the ratio of power of light source S1 to that of light source S2 is 2. S1 is emitting 2 into 10 to the power of 15 photons per second at 600 nanometer wavelength. The wavelength of source S2 is 300 nanometer. Then the number of photons emitted by source S2 is. So यहाँ पे this is based on photoelectric effect. Again they've asked. Okay, fine, no issue. Now, what is the formula? Number of photons emitted by source equal to power of source by energy of photon. Power of source, energy of photon, Sc by lambda. First N1 will be P1 by Sc by lambda 1. So this will become P1 lambda 1 by Sc. Then number of photons emitted by S2 will be P2 lambda 2 by, इसको डिवाइड करेंगे N2 by N1. S1 is emitting 2 into 10 to the power of 5. The ratio of power of light source S1 to that of light source S2 is 2. Lambda 300. S2 is 300 nanometer. This is 600 into 10 to the power of minus 9. Now we'll get answer 5 into. There's a definition. ये आपको पता होगा. Number of photons emitted by the source is equal to power by energy of photon. मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ. Number of photons emitted by source per second equal to power of source, light source by energy of photon. This is the basic definition of photoelectric effect में. इससे आप easily इस problem solve कर सकते हैं. I think is asking simple based on the simple concepts and their definitions. कोई भी लगे anything, energy of photon आपको पता है Sc by lambda, then all problem solving. तो बिना फॉर्मूला अगर आप PYQ कर रहे हो, it's no use. So as your आपका एग्जाम डेट जैसे जैसे अप्रोच हो रहा है,
You have to read more concepts. Concept means revise कर लो. अगर आपको ए फॉर्मूला पता है देन ओनली यू कैन डू समथिंग नो. अगर आपको ये पता नहीं व्हाट इज द पावर व्हाट इज एनर्जी देन व्हाट इज यूज ऑफ डूइंग पी वाई क्यूज. तो पहले थ्योरी पढ़ो, अपने आप को चेक कर लो. लाइक आपको ये पता है थ्योरी नहीं पता है सो पढ़ लो. थ्योरी पढ़ने के बाद फॉर्मूला याद आए ओके मेमोराइज फॉर्मूला देन सॉल्व पी वाई क्यू. ये तीनों बैलेंस करना पड़ेगा आपको. Every day you have to read theory, every day you have to read formulas, every day you have to PYQ. There's a strategy very important. Huh? We'll take the next question. And this problem based on elasticity. Huh? यहाँ पे what is the concept? Huh? The increase in pressure required to decrease the volume of water sample by 0.2% is bulk modulus of water. क्या डेफिनेशन क्या है? बल्क मॉडुलस इक्वल टू माइनस dp बाई dv बाई v. इंक्रीज इन प्रेशर पूछ रहे हैं सो डेल्टा पी पूछ रहे हैं dp और आपका मर्जी आप कौन सा तो सिंबल. वॉल्यूम डिक्रीजेस सो दैट विल बी डेफिनेटली विल बी नेगेटिव. सो बल्क मॉडुलस वैल्यू 2.15 into 10 to power of 9 minus delta p. Decrease in volume 0.2%. 0.2 by 100 v by v. Solve for delta p. I will get the answer. I will take the last one. Acceleration due to gravity on the surface of the earth is g if the diameter of earth is reduced to 1/3 of its original value and mass remains and then acceleration due to gravity on the surface of the earth. Like a acceleration due to gravity gm by r square. If the diameter is reduced to 1/3 of its original value, इसको हम diameter में लिखेंगे. Diameter will become half of the radius. तो कितना होगा 4gm by d square. Mass remains unchanged. Mass as it is. Diameter कितना? Diameter of reduced to 1/3. 1/3 means ये कितना होगा 9 into 4gm by d square. G dash. Okay, fine. Like a kids, like a the paper is moderate and lengthy. That's why the score will not be that good. यहाँ पे. Okay, fine. Next video I'll update you about the strategy for mains. April mains के लिए what has to be done. Okay, thank you all of you. Thank you for great support. So do revise. Those who are preparing for JEE Mains, the strategy is like a read theory, revise formula, solve PYQ. Those who are preparing for advanced, read theory, you must remember formula. Don't work out the PYQ of advanced. You can solve some AITS or any textbook like Singage, work out problems per chapter 100. Keep target or 50. Think on them. Or if you're having teacher notes, revise them. So it should be like a revision 50%, new problems should be 50%. This should be strategy. Okay, in videos I'll update how to prepare for advancements, coming videos. Okay, thank you all of you. Thank you.